Assalamu alaikum viewers, my name is Saifullah. I welcome you all to the platform of Javed Publisher. अपनी आज की इस वीडियो में हम क्लास 4 के कंप्यूटर स्टडीज़ के चैप्टर नंबर 5 MS वर्ड टेक्स्ट इन्हेंसमेंट को स्टडी करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी बुक्स की तरफ और देखते हैं हमें क्या सीखने को मिलता है। टेक्स्ट अलाइनमेंट। अलाइनमेंट रेफर्स टू द पोजीशन ऑफ द टेक्स्ट with respect to the page margins. There are 4 types of text alignment in MS Word: align left, center, align right, and justify. By default, the text is left aligned. The steps to change the text alignment are: Step 1. Select the text that has to be aligned. Step 2. On the Home tab in the paragraph group, click on the desired alignment button. इसके अलावा शॉर्टकट कीज आर: टू अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट प्रेस Ctrl+L, टू अलाइन टेक्स्ट इन सेंटर Ctrl+E, टू अलाइन टेक्स्ट राइट Ctrl+R, एंड टू जस्टिफाई टेक्स्ट Ctrl+J। इन 4 ऑप्शंस को आप टेक्स्ट के अलाइनमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं बुलेट्स एंड नंबरिंग। The bullets and numbering feature is used to represent the text in a listed or points form. A listed text is more readable and easy. Bullets. These are used when there is no particular sequence of the text to be followed. Numbers or alphabets. These are used when there is a sequence of the items to be followed. The steps to apply the bulleted list are: Step 1. Select the desired text. Step 2. On the Home tab in the paragraph group, click on the drop down arrow on the bullets button. Select the required bullet style. इसके अलावा आप शॉर्टकट की Ctrl+Shift+L को प्रेस करके बुलेट्स अप्लाई कर सकते हैं। The numbered list can be created manually also. The steps to create a numbered list manually are: place the typing cursor at the beginning of the first sentence. Type 1, put a dot and press the space bar. A tabular space is set automatically. Now repeat this process at the beginning of other sentence with an increment in the number. अब जल्दी से MS ओपन करें, एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करें और उसकी हेडिंग दें पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। इस हेडिंग को बोल्ड एंड अंडरलाइन कर दें, सेंटर अलाइन कर दें और फॉन्ट कलर ब्लू सेट करने के बाद फॉन्ट साइज 24 कर दें। Type the names of any 4 input devices. Bulleted list color green, font size 14 and font Calibri. Type the name of any 4 output devices. Create a numbered list, set font color orange, font size 14 and font Calibri. Line and paragraph spacing. Line spacing. It is the vertical space between the lines of the text in a paragraph. Paragraph spacing. It is the space above or below a paragraph. The steps to set the line and paragraph spacing are: Step 1. Select the text. Step 2. Click on the drop down arrow button on the line and paragraph spacing button. To set the line spacing, click on the required line spacing option. To set the paragraph spacing, click on the add space before paragraph or add space after paragraph option as per the requirement. See the changes in the line spacing of the selected text in the documents. The line spacing options are not limited to the line and paragraph spacing menu. To set the spacing with more precision, select line spacing option from the menu to access the paragraph dialog box or click on the paragraph dialog box launcher. The paragraph dialog box appears. In the indents and spacing tab, you can set the line spacing and paragraph spacing with more precision. अब हम देखते हैं कि किस तरह अपने टेक्स्ट पर बॉर्डर्स और शेडिंग अप्लाई की जा सकती है। To enhance the appearance of the text in a paragraph, you can add a border and shading to the selected text. You can add either or both to a single paragraph or any group of paragraphs to make them stand out from the rest of the document. You can use any border thickness, style and color for bordering and any color for shading.
A paragraph border appears under the outside of a single paragraph. Shading is a colored background behind the selected text or paragraph. Here, we will perform these processes using the borders and shading dialog box. The steps to set border and shading are: Step 1. Select the text. Step 2. On the Home tab in the paragraph group, click on the drop-down arrow on the Borders button. Borders can also be given to the whole page or document. Click on Border and Shading option. The Border and Shading dialog box appears. There are 3 tabs on this dialog box: Borders, Page Border, and Shading. You need to go to the particular tab to apply text border, page border, and shading. Now follow the steps below. Setting text and page border. Refer to the image on next page. For text border, go to the Borders tab, and for page border, go to the Page Border tab. Click on any one option in the setting section. For example, box. Select any line style in the Style section. Step 3. Set the border color using the Color List box. Step 4. Set line width using the Width List box. These options can also be used to apply simple line border to the selected text paragraph. Step 5. For text border, select paragraph from the Apply to List box. For page border, select whole documents from the Apply to List box. You can also select any artwork as a page border. Select any artwork using the Art List box. Now click on the OK button. इन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने होल डॉक्यूमेंट को बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। सेटिंग शेडिंग. Go to the Shading tab and select any color from the Fill List box. Select the required option from the Apply to List box. By default, it is Paragraph. Click on OK button. To set the color background to the selected text, you can use the Shading tool also. This tool is used to set the background color of the text, paragraph or table cell. The steps to set color background to the text are: select the text behind which you want to apply the color background. Step 2. On the Home tab in the paragraph group, click on the drop-down arrow on the Shadings button. Select the required color for the background from the Colors grid. The required color background is applied on the selected text. अब जल्दी से MS Word ओपन कीजिए, एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कीजिए और उन डॉक्यूमेंट को इस तरीके से डिज़ाइन करें. Give a heading My School, bold, underline, center aligned, font color blue and font size 24. Type 10 sentences about your school in a numbered list form. Set the font size 18 and font Calibri. Select the text and set line space 1.5 points. Open the Border and Shading dialog box and set a page border using an art. Give a color background to the text. Save the file with the file name, your name, school name. For the further reference, see this figure. अब हम देखते हैं कि किस तरह अपने डॉक्यूमेंट पर एक वाटरमार्क अप्लाई कर सकते हैं. Watermarks are faint imprints of text or images that appear behind the text. A watermark can enhance the appearance of the document by adding a text or image that identifies the document contents as a draft or confidential information. Adding and removing watermark. The steps to add a watermark in the document are: Step 1. On the Design tab in the Page Background group, click on the drop-down arrow of the watermark button. Step 2. Click on the desired watermark styles. Step 3. To remove an existing watermark, click on the Remove Watermark option. इन स्टेप्स को फॉलो करके आप वाटरमार्क को ऐड और रिमूव कर सकते हैं. नाउ ओपन द डॉक्यूमेंट. योर नेम, स्कूल नेम जो भी आपने बनाया, उस डॉक्यूमेंट को ओपन करें, उसका कलर बैकग्राउंड रिमूव करें यूजिंग बॉर्डर एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स, और उसके बाद उस पर
एक वाटर मार्क अप्लाई करने के बाद उसको सेव कर लें। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 5 टेक्स्ट एनहांसिंग। अब हम इस चैप्टर का एक क्विक रिव्यू करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा। क्विक रिव्यू। अलाइनमेंट रेफर्स टू सेटिंग द डायरेक्शन पोजीशन ऑफ द टेक्स्ट। The bullets and numbering feature is used to represent the text in listed or points form. Line spacing is the vertical space between the lines of the text in a paragraph. Paragraph spacing is the space above or below a paragraph. To enhance the appearance of the text in a paragraph, you can add a border and shading to selected text. Watermarks are faint imprints of text or images that appear behind the text. तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 5 टेक्स्ट एनहांसमेंट। इसमें हमने टेक्स्ट पे बॉर्डर्स और शेडिंग्स अप्लाई करना सीखा और उस पे मुख्तलिफ किस्म के वाटर मार्क्स अप्लाई करना भी सीखे। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा और आप अब खुद से भी अपने डॉक्यूमेंट्स पर वाटर मार्क्स और बॉर्डर्स अप्लाई कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर की एक्सरसाइज के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।